Hello everyone, welcome back to my channel EduRay. So today we are going to learn the first chapter of Maharashtra Board Class 11 Sociology book. So this is the Sociology class for Standard 11 of Maharashtra Board. The first chapter is Introduction to Sociology. So in this chapter we are going to learn its definition. What is the nature of sociology? मतलब सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, सोशियोलॉजी कैसे आया, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी क्या क्या स्टडी करता है, देन सोशियोलॉजी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. So we are going to learn definition, nature, scope of sociology and importance of sociology. So first let's begin with the introduction. So in this first unit students will learn how sociology is a different discipline of knowledge. मतलब सोशोलॉजी एक रीसेंट डिसिप्लिन है. जैसे देर इज़ हिस्ट्री, देर इज़ जोग्राफी, देर इज़ इकोनॉमिक्स. सो व्हाट आर दे आर द ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस. तो सोशोलॉजी इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ अ सोशल साइंस, but it is very recently developed. So that is why now we will learn how sociology is a different discipline. मतलब सोशोलॉजी एक खुद की ब्रांच, एक खुद का डिसिप्लिन है, एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन है. जैसे हिस्ट्री इंडिविजुअल डिसिप्लिन है, लाइक दैट सोशोलॉजी इज़ अ डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज. It attempts to give an overall idea of nature of sociology. To understand the field or scope of sociology is also an important objective of our study. So we will understand the scope of sociology. This unit will attempt to trace the relationship between emergence of sociology and social and intellectual conditions of 18th and 19th century in Europe. मतलब यहाँ पर we will see how sociology emerged as a different discipline, and we will trace its relationship between the conditions in Europe and its emergence. मतलब यूरोप में जब सोशोलॉजी एमर्ज हुआ, सोशोलॉजी इंडिविजुअल डिसिप्लिन बना, तब यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में कैसी कंडीशंस थी, वी विल गेट टू नो दैट. इनिशियली सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एमर्ज्ड इन यूरोप. So you all can mark this line or with a pencil or highlight that sociology as a discipline emerged in Europe. Now let's move ahead. Sociology emerged as an independent and separate discipline only around the middle of 19th century. So जैसे history है, history has origin a long time ago. Means history we study a longer time, we study from 6th. Sociology as a different subject we are studying from 11th. जो history है उसका origin बहुत पहले हुआ था, पर sociology एक new discipline है. Because why? Because it has an independent and separate discipline emerged only at the middle of 19th century. Did it emerge? So middle of 19th century it emerged. The emergence of sociology no doubt has changed the approach to the study of human society. It became a distinct, unique and young social science. So ये features है sociology के, it is a distinct, unique and young social science. Young because it has emerged in the middle of 19th century. अब sociology के emergence से ऐसा क्या हुआ? So देखो, sociology is nothing but science of society. So जैसे अगर हम किसी सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे काम कर रहा है, उसके क्या फीचर्स है, हम ऑब्जर्व करेंगे एक ग्रुप ऑफ पीपल को. सो हाउ दे आर बिहेविंग, द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी. सोशियोलॉजी इज़ कनेक्टेड विथ ऑल ऑफ देम. मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को या किसी सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सोशियोलॉजी के अंदर आ जाता है वो. सो जब हम किसी चीज़ को एक साइंटिफिक वे में ऑब्जर्व करते हैं, मतलब सोशियोलॉजी इज़ रिलेटेड टू साइंस, तो हम अगर सोसाइटी को या ग्रुप ऑफ पीपल को साइंटिफिक मैनर में ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा सोसाइटी के प्रति अप्रोच बदलेगा. वी विल सी द ह्यूमन सोसाइटी इन अ डिफरेंट मैनर. दैट इज़ वाई द अप्रोच टू स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज़ चेंज्ड. The major concern of sociology is society, particularly human society. Hence, it is popularly known as science of society. It is known as science of society because sociology is composed of two words. We will learn that ahead. Socius meaning friend, companion, which later became society, and logos, which means science.
Therefore, sociology is known as science of society. I will discuss this detail when it comes in the later part of this video. Here it is a social science. It has acquired a distinct status for itself. Today, its importance and practical usefulness is widely recognized all over the world. Sociology is concerned with the life and activities of human beings. It studies the origin and development of human society, its structure, functions. मतलब अब जो सोशोलॉजी है वो किससे कंसर्न है, क्या स्टडी करता है, तो हाउ जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हम कैसे बिहेव करते हैं, व्हाट आर द एक्टिविटीज़, हम क्या क्या करते हैं, हाउ डज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स फंक्शन. It also studies origin and development of human society. एक ह्यूमन सोसाइटी है, ग्रुप ऑफ पीपल, हाउ दे ओरिजिन, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, लाइक बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए. आफ्टर दैट द सोसाइटी डेवलप्ड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन, उसके बाद सोसाइटी डेवलप हुई. तो सोशोलॉजी इन सब चीज़ों को स्टडी करता है. It determines the relationship and interdependence between different elements of social life. मतलब कि हम जो सोशल लाइफ है उसमें हम कैसे इंटरडिपेंडेंट है, ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट. इट फोकसेस ऑन स्टेबिलिटी एंड चेंज इन सोसाइटी. व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर्ड इन द सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. And it studies evolution and revolution as well. Sociology is an independent social science which stands on scientific inquiry of social phenomena. In short, sociology is the science of social relationships and social behavior. So you can mark this last line important, that sociology is the science of social relationships, how humans make relationships, how it affects the society. That social relationships, social behavior, human कैसे behave करता है, that is called social behavior, how a society behaves. There are some rules, regulations of a society, how it is. So that is social behavior, social relationship. So this line is important, you can mark it. Then we are going to study sociology definition and nature. So what is the definition of sociology? तो अगर अब आप देखोगे सोशोलॉजी का डेफिनेशन, जो डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं, लाइक डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट, नॉट साइंटिस्ट, सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सब एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, राइट. इंडिविजुअल का अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो सब सोशोलॉजी के डेफिनेशन एकदम अलग है. सो सोशोलॉजी के बहुत सारे डेफिनेशन है. अगर मैं सोशोलॉजी स्टडी कर रही हूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा, माई डेफिनेशन वुड बी डिफरेंट, योर डेफिनेशन वुड बी डिफरेंट. सो देर आर मैनी डेफिनेशंस ऑफ सोशोलॉजी. Sociology is the science of society. It studies social relationships and society. We study social relationship, its forms, varieties and patterns, as well as social groups, social structure, social status, social norms, social problems, the changing nature of society and number of things. So अगर आप ये पढ़ रहे हो तो इसमें सब में social word आ रहा है. Why? Because it is social. Social मतलब क्या कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक सोसाइटी से रिलेटेड हो. तो सोशोलॉजी हर वो चीज़ है जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, इसलिए सोशल बोलते हैं, सोशल. वी शैल बिगिन विथ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज सोशोलॉजी? द आंसर इज ऑल्सो वेरी सिंपल. सोशोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी, और सोशोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स इन सोसाइटी. तो जैसे मैंने बोला था, सोशोलॉजी क्या है? एक ह्यूमन बींग है, एक सोसाइटी में है, एक ह्यूमन बींग्स है, मैन है, उनकी स्टडी, हाउ दे बिहेव, हाउ दे एक्ट, दैट इज सोशोलॉजी. और साइंटिफिक स्टडी, इट इज़ अ सोशल साइंस. साइंस क्यों? बिकॉज इट स्टडीज इन अ साइंटिफिक मैनर. साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स इन सोसाइटी, मतलब सोशल इवेंट्स कैसे टुक प्लेस हुए, कैसे हुआ, उनसे क्या डिफरेंस हुआ, व्हाट आर देयर इफेक्ट्स. सो लाइक अर्बनाइजेशन एक सोशल इवेंट था, उसके क्या इफ़ेक्ट हुए, हाउ इट अफेक्टेड द सोसाइटी, सोशोलॉजी वो स्टडी करता है. सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से सोशोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स इन द सोसाइटी. टू अंडरस्टैंड, देखिए अभी इन लोग ने आंसर दिया था व्हाट इज सोशोलॉजी, राइट. नाउ दे आर अगेन सेइंग टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट एंड साइंटिफिक डेफिनेशन.
So can you say this is the definition? No, there are multiple definitions. In this textbook you will find on the next page also there are definitions. So you should take the most suitable definition that you think. I will also tell like what if a question comes, what is the definition of sociology? So there are some key points, मतलब वो आंसर में ऐसे की पॉइंट्स होने ही चाहिए, नहीं तो फिर आपका सोशोलॉजी का डेफिनेशन रॉन्ग होगा. So I will tell you that. We first have to take in account how the word sociology is derived. Example, the etymology of the word sociology. Etymology का मतलब क्या है? Derivation. It's how is it derived? The French philosopher Auguste Comte, we pronounce Auguste Comte, is considered to be the father of sociology. So he was the first French philosopher or the first of the sociologists which developed sociology. So and he is accredited with coining the term sociology. मतलब sociology term कैसे आया? Sociology term is given by the French philosopher Auguste Comte. That is why he is called father of sociology, because he developed sociology. He gave the term sociology in 1839. So this year is important, 1839. Then where did he give this term? So that is also important in his book Positive Philosophy, and where in the 4th volume of his book he mentioned for the first time the word sociology. तो ये सोशोलॉजी मेंशन करने से पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने सोशोलॉजी को सोशल फिजिक्स भी बोला था. Why? Because he was a professor of physics. He studied physics. That is why before coining the term sociology, he had called it as social physics. So we will learn that also later. Now we will learn sociology is composed of two different words. A Latin word socius. तो अब मैंने जैसे बताया था आपको स्टार्टिंग में, सोशोलॉजी किससे कंपोज्ड है. तो सोशोलॉजी में दो वर्ड है. एक लैटिन वर्ड है जिस दैट इज सोशियस, एंड एक ग्रीक वर्ड है दैट इज लॉगस. तो सोशियस का क्या मतलब होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट मीन्स कंपेनियन और एसोसिएट. कंपेनियन मतलब फ्रेंड, एसोसिएट उसको हम इवेंचुअली रेफर करने लगे एज सोसाइटी. मतलब सोशियस का मतलब होता है फ्रेंड, कंपेनियन, जिसको हम बोलने लगे सोसाइटी. लोगस एक ग्रीक वर्ड था और सोशियस एक लैटिन वर्ड था, ये भी रिमेंबर करना है. अब ग्रीक वर्ड लोगस का मतलब है साइंस और स्टडी. सो सोशोलॉजी का क्या मतलब हुआ? स्टडी ऑफ सोसाइटी या साइंस ऑफ सोसाइटी. So the etymological meaning of sociology is thus the science of society. अब कोई पूछेगा etymological, ये जो टर्म है etymological, इसका क्या मतलब है? etymological means एक वर्ड का लिटरल मीनिंग, मतलब वो वर्ड कैसे डिराइव हुआ, उसका असली मीनिंग, लिटरल मीनिंग, उसे बोलते हैं etymological meaning. ओके. सो सोशोलॉजी इज़ दस द साइंस ऑफ सोसाइटी. जैसे मैंने बोला था previously Comte termed this science as social physics. I had mentioned that sociology coin करने से पहले उन्होंने इसे social physics बोला था because he was studying physics only. Later on, it popularly came to be known as sociology. He found that a need for new science to study social phenomena from a scientific approach. See, now again there are definitions of sociology. We will look into that. So there are three definitions given by Auguste Comte, George Simmel and Oxford Dictionary. Sociology is the science of social order and progress by George. It is sociology is the science of the forms of human interrelations. Oxford Dictionary, it is sociology is the study of development, structure and functioning of human society. अब क्या ये सब definition हमें याद करने हैं? What is the real definition of sociology? So as I mentioned, sociology is based on society. So we can also think what is sociology. It is individual perspective. एक इंसान भी अलग अलग इंसान अलग अलग definition देंगे sociology का, because it is based on individual response. तो जो sociology का जो main definition होता है उसमें key features होते हैं, वो भी text book में mention है. So जो सोशोलॉजी के डेफिनेशन है ना, उसमें यू जस्ट हैव टू एम्फेसाइज द साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशोलॉजी. दिस
the stress on the relation between human beings and society, and how sociology is a complex social science which differs from all other social sciences. So now I'm going to say a definition of sociology that you can write down in your notes. So it is basically the combination of all the definitions given in the textbook. Another definition, you can also frame it, or if you want to choose a definition from Google, you can do that. So it is upon you, because sociology is a field in which there are many definitions. So you can do that. Yeah. So it is written in the book that there is no consensus among sociologists regarding one common definition because of the complexity of the subject and subject matter. मतलब कोई लड़ाई नहीं होती है सोशलॉजिस्ट में कि ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ही है, बिकॉज वो सब्जेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है. इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, so there is no such one definition. In giving this definition, it is the combination of all the definitions given in the textbook. So either you can write the definition of one of these, Auguste Comte, George, or Oxford Dictionary, or you can write this, that sociology is the science of society and it studies social relationships and social behavior of a man in society. Sociology is the scientific study of social events in a society. So this can also be the definition, because in this we have emphasized the scientific nature of sociology. Then we have stressed on the relationship between human and beings and society. And there is clear that sociology is a social science which differs from all other social sciences. So now here there is a para of what is sociological imagination. So sociological imagination, मैं इसमें से सिर्फ बता देती हूँ important क्या क्या है. Sociological imagination is a means to see through our everyday knowledge and make adequate sense of our own lives. मतलब अगर आप किसी चीज़ को एक साइंटिफिक मैनर में सोचेंगे, अगर उसे सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आपकी जो इट इज़ अ मीन्स टू सी थ्रू आर एवरीडे नॉलेज एंड एडिक्वेट सेंस ऑफ आर ओन लाइफ्स, हाउ वी वर्क, हाउ आर एवरीडे टास्क्स आर डन. इफ वी सी this through the perspective of sociology, then it is called as sociological imagination. Up the important paragraph is this one. Sociological imagination is a book written by sociologist Cyril Mills in 1959. According to Mills, the best sociologists seem to possess a special way of thinking. अब जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो क्यों सोशोलॉजिस्ट है? क्योंकि उनमें एक थिंकिंग की पावर होती है. दे थिंक इन अ डिफरेंट मैनर देन द अदर पीपल. This special perspective allows them to understand the interrelationship between individual lives and societies, how the individual life of a human being is connected with the society. Mills argued that we needed a sociological imagination not only to make sense of our problems but also to be able to act towards these problems in an effective manner. मतलब अगर हम जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसे एक सोशल तरीके से देखेंगे, सो वी विल बी एबल टू मेक सेंस. मतलब प्रॉब्लम्स कैसी है वो हम समझ पाएंगे और हम एक इफ़ेक्टिव तरीके से उसका सल्यूशन देख पाएंगे. इफ़ वी सी दोज प्रॉब्लम to a sociological imagination type. So that is what Mills argued. So now let's understand nature of sociology. Nature of sociology, there are basically 4 points in that. So if you want the notes of this chapter, so please subscribe to my channel Eduray, as I'm going to post the videos on the whole of this sociology book. So every chapter would be covered and I would make a separate video of the notes, and I will also solve the exercise of the chapter. So if you want the videos and the notifications, to subscribe to my channel Eduray and press the bell icon. And if you are able to understand till this, do like this video. So now let's start with the nature of sociology. Sociology is a social science. It is a branch of knowledge that provides us information about social life of human beings and society at large. So किसकी information provide करता है? Human beings की और society at large.
So a particular human being is a very small thing, but a society is a large perspective. In many respects, sociology differs from all other social sciences. To understand the nature of sociology, it is essential to look the following points. So there are 4 points. Sociology is an empirical science, sociology is theoretical and applied science, and sociology is a factual science, and then sociology is a holistic science. So before reading these, I will explain the 4 points, then you all can read it. So in the first point, sociology is an empirical science. So what does this word empirical mean? So empirical also refers to empiricism. So empiricism means that it is based on human knowledge, past experiences. So empiricism is a philosophical doctrine that all human knowledge is derived from experience. So from the experience the terms are derived, or from human knowledge it is derived, or the actual experience of a researcher. मतलब जो टर्म है या कोई कॉन्सेप्ट है वो कैसे डिराइव होता है एक्सपीरियंसेस से डिराइव होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से होता है, एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्च मतलब जो उस पर रिसर्च कर रहा हो उसके एक्सपीरियंस से होता है, या ह्यूमन नॉलेज से डिराइव होता है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पिरिसिज्म. So now why sociology is an empirical science? Sociology is an empirical science because sociology studies and analyzes social facts on basis of scientific method. मतलब हम sociology के जो facts होते हैं ना, हम उसे scientific techniques, observation उससे derive करते हैं. Then the rules are framed in sociology with the help of observation. So how are the rules framed? Because of observation and experiences. एम्पिरिसिज्म का क्या मतलब था? एक्सपीरियंस. सोशोलॉजी के रूल्स कैसे डिराइव होते हैं? विद एक्सपीरियंसेस. देयरफॉर सोशोलॉजी होल्ड्स दैट एम्पिरिसिज्म इज इट्स सेंट्रल फीचर एज अ साइंस. So that is why it's a empirical science, because we engage in scientific research by scientific techniques like observation, experimentation, and that is why sociology is a empirical science. Then sociology is a theoretical and applied science. So theoretical क्यों है? First we will understand that. So sociology helps us to understand society by different theories. अब sociology में बहुत सारी different theories होती है by which we get to understand the society. So therefore it is theoretical. Yes, there is a systematic development and formulation of sociological theory, verification of already existing theories and formulation of new theories is a constant process in sociology. मतलब सोशोलॉजी में बहुत सारी थियोरीज होती है जिससे हमें सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने को मिलता है. देन हाउ आर दे वेरीफाइड? द थियोरीज आर वेरीफाइड इफ दे आर ट्रू. सो हाउ आर दे वेरीफाइड? बाय एंगेजिंग इन साइंटिफिक इंक्वायरीज. Then for that also theories are made. For formulation of new theories, verification is done. So it is theoretical because it is involved in theories. Therefore it is theoretical. And now how is it applied science? So since many branches of sociology are based on application of sociological knowledge to the field. मतलब अगर अभी हमने sociology theories पढ़ ली, but if we will not apply it in real life, would it be beneficial? No. What this theories which we study in sociology, we apply to the real life. That is why it is known as applied science. Hence it is pure as well as an applied social science. The third point is sociology is a factual science. So now why is sociology a factual science? So sociology is a factual science because the aim of sociology is to find out reality of society. Sociology understands the society as it is, not what should it be or what ought to be. मतलब सोशोलॉजी सोसाइटी को कैसे अंडरस्टैंड करता है? जैसी है वैसी ही सोसाइटी को अंडरस्टैंड करता है. एज इट इज़, इट अंडरस्टैंड द सोसाइटी एज इट इज़. It does not think that society should be like this, society should have been like this. It does not think of the future points. It studies the present thing of the society. So that is why it studies the facts of society.
Therefore, sociology studies the constructive part, destructive elements in the society, moral, immoral, organized and disorganized aspects of society. It studies the facts of society. So that is why it's a factual science. It does not study the future, past of the society. It studies the facts of the society. What actually happened in that society, that it studies. It studies facts. That is why it is a factual science. Fourth point is sociology is a holistic science. So why is sociology a holistic science? Because sociology studies society as a whole. It does not limit itself to the study of any specific और पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. इसका मतलब सोशोलॉजी सभी सोसाइटी को स्टडी करता है. ऐसा एक लिमिट नहीं होती है कि हम यही पर्टिकुलर सोसाइटी को स्टडी करेंगे. वी विल नॉट स्टडी दिस सोसाइटी. नो, इट स्टडीज ऑल सोसाइटीज एंड इट स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ. It studies all society, it studies all its aspects and also the aspects of social life. Therefore, it is a holistic science. Now you will ask, what is the meaning of holistic? So I will tell you that. So the definition of holistic is that it is relating to or concerned with the whole thing or complete system. इसका मतलब है कि वो पूरी चीज़ को, पूरे सिस्टम को, complete system या the whole thing को स्टडी करता है. सो सोशोलॉजी स्टडीज द होल सोसाइटी. होल, द वर्ड होल कम्स, देयरफॉर इट इज़ अ holistic science. So in the next video which I will post, in that we are going to study the later part of the chapter, emergence, scope, importance. So subscribe to my channel so that you receive the notification of the part 2, and do like this video and share it with your friends and family. Thank you.